हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद भक्ति वासुदेव स्वामी महाराज जी की नहीं, नो महाराज, नो महाराज।
Prabhupada. Jai Gurudev. Sri Radha Krishna, Gopal Gopinath, Shyamakunda, Radha Kunda, Kirikudan, Kirikudan, Sevindavadan, Kirikudan, Mathuradan, Kirikudan, Mayavanavadan, Kirikudan, Jagannapuradam, Kirikudan, Gangamaya Yamamaya, Kirikudan, Smatosdevi Bhakti, Kirikudan, Samadev Bhakti, Kirikudan, Nitai Gopinath, Hari Hari Bol. All glories to Swami. Hare Krishna. All glories to Swami. Hare Krishna. All glories to Swami. Hare Krishna. Glories, all glories to Mr. Gauranga. Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo I have Malayalam. Naranchaiva Narottama. Devim Saraswati Vyasam. Tato Jayamudhiraye. Nashtapraye Saratvesu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhakti Bhavati Naistiki. Srimad Bhagwatam, Canto 1, Chapter 11, Text 6. So, yeah, okay, you can raise your voice. Yeah. All right, well, that is Prabhu, read the text for us. Yes. Natasmatina tasadanghi pankajam Girincha vairincha surendra vanditam Parayanam shema ichchatam param Nayatra kala pravavati para prabhu Tasmatina tasadanghi pankajam Virincha vairincha surendra vanditam Parayanam shema ichchatam param Nayatra kala pravavati para prabhu Virincha
पङ्कजम् वीरञ्चि वेरञ्चि सुरेन्द्रवन्दितम् वीरेञ्च वीरेञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् नारायणं क्षेमहीप्सितं परम् नारायणं क्षेममिच्छेतां परम् नायत्र काला प्रभवते परा प्रभु नायत्र काला प्रभवे परा प्रभु Mataji's नाथा स्मरे नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् वीरेञ्च वैरेञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् नारायणं क्षेममिच्छेतां परम् नायत्र काला प्रभवे परा प्रभु Mataji's anyone else? नाथास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् वीरेञ्च वैरेञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् नारायणं क्षेममिच्छेतां परम् नायत्र काला प्रभवे परा प्रभु One more Mataji. माता समर्पा सदाङ्घ्रिपङ्कजम् वीरेञ्च वैरेञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् पारायणं क्षेममिच्छेतां परम् नायत्र काला प्रभवे परा प्रभु So, word for word translation, then translation and performed by Divine Grace is compound Sonata, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj. Srila Prabhupada ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Very good. You know, the reason why I asked the Matajis to chant, three Matajis to chant, is because three men Equality. three men recited the best. I don't know what the case in India, but in America there's a lot of competition, or women trying to match up with men. So, for one, that when people come to Krishna consciousness, they should understand Krishna is meant for everybody, and no one is neglected. So, the men recited, three men recited, so I wanted also the Matajis, our worship people Matajis to also recite at least three to match up. That's why I asked. Thank you, Maharaj ji. तो महाराज बोल रहे हैं कि ऑलरेडी मतलब यहाँ पे तीन प्रभुओं ने ट्रांसलेशन को गाया है, तो यहाँ इंडिया में तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अमेरिका में कंपटीशन मैन और वुमेन के बीच में, माताओं और प्रभु के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए महाराज चाहते हैं कि तीन माताएं भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और श्लोक को गाएं. So, word for word translation, Nataha. Can we, how do you do it here? Yes, go. Nataha. Nata. Bow down. Sma. We have done so. We have done so. Maharaj first you recite in Hindi, then repeat Hindi. But what about the word for word translation? Actually, everybody have Hindi, Bhagwatam, Maharaj ji. So word for word translation is not there in Hindi. Oh no, you just speak the word, means Natasma, and then you speak in Hindi, and we will all Okay. speak in Hindi. Alright. Okay. Nataha, O Lord, Sada always, and Ripankaja, the lotus feet, Rincha, Brahma,
the first living being. They didn't share sons of Brahma like Sanaka and Sanatana. Sura Indra, the king of heaven, and the term worshipped by Parayana, the supreme. Chema, welfare. Iha, in this life. Chatan, one who so desires. Param, the highest. Now, never. Yatra, where? Kalaha, inevitable time. Bababed can observe its influence. Paraha, transcendental. Prabhu, supreme Lord. So, translation. The citizen said, "O Lord, you are worshipped by all demigods like Brahma, the four Sanas, and even the King of Heaven. You are the ultimate rest for those who are really aspiring to achieve the highest benefit of life. You are the supreme transcendental Lord, and inevitable time cannot exert its influence upon you." नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। Purport. The Supreme Lord is Sri Krishna as confirmed in the Bhagavad Gita, Brahma Samhita, and other authorized Vedic literatures. No one is equal to or greater than him, and that is the verdict of all scriptures. The influence of time and space is exerted upon dependent living entities, who are all parts and parcels of the Supreme Lord. The living entities are predominated Brahman. The living entities are predominated Brahman, whereas the Supreme Lord is the predominating Absolute. As soon as one forgets this clear fact, we are at once in illusion, and thus we are put into threefold miseries, as one is put into dense darkness. The clear consciousness of the cognizant living being is God consciousness, in which one bows down unto him in all circumstances. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। न तो कोई उनके समान है, न ही कोई उनसे बढ़कर है, और यही सभी शास्त्रों का निर्णय है। समस्त जीव जो परमेश्वर के अंश रूप हैं और उन पर आश्रित हैं, उन पर देश काल का प्रभाव पड़ता है। समस्त जीव अधीनस्थ ब्रह्म हैं और परमेश्वर परम अधिष्ठाता है। हम जैसे ही सुपुष्ट तथ्य को भूल जाते हैं, वैसे ही हम तत्काल मोहग्रस्त हो जाते हैं और तीनों तापों से उसी प्रकार ग्रस्त हो जाते हैं जिस प्रकार किसी को घने अंधकार में रखा गया हो। सजग जीव की विमल चेतना ईश चेतना है, जिसके अंतर्गत मनुष्य हर परिस्थिति में श्री भगवान को प्रणाम करता है। वैष्णव्यो नमो नमः। Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Jai Sri Krishna Chaitanya प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर Hare Krishna हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Namo Vishnu Padaya Krishna Dasya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Namaste Saraswati So, we'd like to thank all of you for finding out time to come to this Bhagwatam class. तो हम आप सभी का बहुत ही स्वागत करते हैं कि आप सभी लोगों ने समय निकालकर इस भागवतम क्लास में आप लोग उपस्थित हुए हैं। It means that you love Krishna.
इसका मतलब ये है कि आप लोग कृष्ण भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। हरि बोल। And Krishna is a good place to put our love, because he will never disappoint us. हरि बोल। और कृष्ण भगवान के प्रति अगर हम लोग प्रेम करते हैं तो वो सबसे सही स्थान है, क्योंकि कृष्ण भगवान हमको कभी भी निराश नहीं करेंगे। So in this text, this is a continuation of Lord Krishna's return to Dwarka. When your loved ones travel out to overseas or travel out to some other state or to another country or whatever, when they return, we normally go to the airport to receive them. We are very happy. तो अभी का जो ये श्लोक है, ये जब कृष्ण भगवान द्वारका वापस लौटे हैं उस समय का विवरण है। तो महाराज बता रहे हैं कि जैसे कोई भी अगर हमारे सगे संबंधी आते हैं तो हम लोग इन दिनों उनको एयरपोर्ट पर वेलकम करने के लिए जाते हैं, बहुत ही खुशी मुद्रा में। So here Krishna has arrived from his outside tour of Dwarka, and the Dwarkavasis are so much excited, seeing, having an encounter, having a face-to-face interaction with their object of love, Lord Krishna. तो कृष्ण भगवान द्वारका शहर के बाहर पहुंच चुके हैं और द्वारका वासी सभी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में है भगवान कृष्ण से फेस टू फेस मिलने के लिए। And the citizens or the Dwarkavasis, they are expressing, they are exalting the Lord. They said, see, we are just some tiny entities. We are servants. You are worshipped by even the demigods. You are worshipped by Lord Indra, by Lord Brahma, by Lord Shiva. Why? Because Krishna's two Bhagawans. स्वयं। द्वारकावासी बोल रहे हैं कि हम लोग तो बहुत ही तुच्छ और निम्न हैं। आपकी पूजा अर्चना तो बड़े बड़े देवी देवता ब्रह्मा शिव जी भी करते हैं, लेकिन आप हमारे सामने प्रकट हुए और अपना दर्शन दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। It's also mentioned in this text how even the Kumaras, there are 4 Kumaras. Kumaras are like, they look like they are some of the oldest people in the universe, but they look like, you know. चाहिए। How old are you? कितना साल का है? He's 10 years old. No, Kumaras are younger. They look younger than me. Half. 5 years. But they are all sages. But they're able to maintain their child age by the deed of their mystic power. महाराज बता रहे हैं कि जो चतुष कुमार हैं वो बहुत ही बड़े भक्त हैं, लेकिन इसके बाद भले ही वो बहुत ही वृद्ध हैं, लेकिन वो उनका उम्र जो है एक छोटे से बच्चे के समान है। मतलब वो कभी उनका उम्र से 5 वर्ष के बच्चे के समान दिखते हैं, हालांकि वो बहुत ही बड़े भक्त हैं। The 4 Kumaras were also sons of Lord Brahma. 4 कुमार चतुष कुमार हैं, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। If you really talk down to, you see how Brahma created different types of beings. Some from his mind, from his back, from his hand, from his belly. हम भागवतम में पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी के अलग अलग शरीर के अंगों से अलग अलग लोग उत्पन्न हुए, जैसे ब्रह्मा जी के मन से, ब्रह्मा जी के पीठ से, तो अलग अलग अंगों से अलग अलग लोग जन्म लिए। So even Lord Brahma didn't need a woman for impregnation to procreate. What about the Supreme Lord? ब्रह्मा जी को भी किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है किसी बच्चे को जन्म देने के लिए, तो हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं भगवान को किसी स्त्री की क्या आवश्यकता होगी। Sometimes people query, oh, Krishna has 16,108 wives. अच्छा। तो कभी-कभी लोग प्रश्न करते हैं कि कृष्ण भगवान के 16,108 पत्नियां थीं, ऐसा क्यों? And from these wives, he had children. अच्छा। हर एक पत्नियों से उनके पुत्र भी हैं, ऐसा कैसे? अच्छा। Their brain consciousness become clouded with doubts.
उनके मन में हमेशा इन सब बातों को सुन के भ्रम हो जाता है कि ऐसा कैसे संभव है 16,108 पत्नियां हो और हर एक पत्नियों से बच्चे हो. You say Krishna is God. He had wives. He had children. Means he was having sex. आप बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान है और हम ये पढ़ रहे हैं कि श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं. इसका मतलब उन लोग कृष्ण भगवान ने संभोग किया होगा. So if someone queries you like this, what would be your response? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये प्रश्न पूछेगा तो आप उसका जवाब क्या देंगे? You see, the person says, well, if this is your God, I don't want to worship this type of God. तो लोग बोलते हैं कि अगर आपके भगवान इस तरह के हैं तो मैं ऐसे भगवान की पूजा नहीं करना चाहता. He's doing the same thing that I am doing. So what's the difference? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसा आपके भगवान करते हैं वो काम तो मैं भी कर रहा हूँ. हमारे और भगवान के बीच में फिर अंतर क्या है? Let's say Krishna claims they are interchangeable. Krishna doesn't eat with his mouth, he eats with his eyes. बट ऐसे लोगों को मालूम नहीं है कि कृष्ण भगवान की सारी इंद्रियां सभी इंद्रियों का कार्य कर सकती हैं. भगवान आंखों से खा सकते हैं. Krishna casts his glance on his wives and they become impregnated. भगवान अपनी पत्नियों को सिर्फ अपना दर्शन, अपना ग्लांस दिखाते हैं, मतलब सिर्फ अपना दृष्टिपात करते हैं और पत्नियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं. Krishna casts his glance on material nature becomes impregnated with living entities. कृष्ण भगवान अपना दृष्टिपात पूरे इस भौतिक जगत के ऊपर करते हैं और एक भौतिक जगत जो है सारे जीवों से भर जाती है. And so sometimes, I remember there was a case in one of these European countries. Some reverend sisters or something like that, they took this one to court that these people are blaspheming God. Look at in their books, they say Krishna is their God. And look at how this Krishna was playing around with girls in the dead of night. And they say he's God. बता रहे हैं कि एक यूरोप की एक देश में दो बहनों ने कोर्ट में केस किया कि ये लोग हैं जो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन इनके कृष्ण भगवान रात के काल में इतनी सारी स्त्रियों के साथ संग कर रहे हैं. तो ये कैसे भगवान है? But you know what happened to the case? लेकिन आपको पता है उस केस में क्या हुआ? Lord Krishna mentions in Gita, Ishvara Sarvabhutana really see. Arjuna says that he is situated in the heart region of each and every one. He is also situated in the heart region of the judge of that case and the judge true of the case. तो कृष्ण भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि वो सभी के हृदय में विराजमान है. तो कृष्ण भगवान उस जज के हृदय में विराजमान थे और उस जज को भगवान ने निर्देश दिया और उसके जज ने उस केस को बहिष्कृत कर दिया. So during cross-examination, the cross-examiner, they so much gave details about the Christian tradition and what Jesus and all of the avatars, and then they pushed these people who brought the devotees to court, they pushed them on the wall, and then the judge just threw out the case. The judge said, I believe that Krishna is God. जितने वकील लोग थे वो लोग बहुत अलग-अलग तर्क ला रहे थे. वो बाइबल और अनेक बाकी धर्मों से अलग-अलग प्रूफ ला रहे थे, लेकिन जो जज थे उन्होंने सीधे उन सभी चीजों को नकार दिया और बोले कि श्री कृष्ण भगवान, मैं मानता हूं कि श्री कृष्ण भगवान परम भगवान है. So the point I'm trying to establish is, if Lord Brahma, this is in the third canto, if Lord Brahma can create progeny, not requiring a woman, what about Krishna who created Lord Brahma? तो हम भागवतम के तीसरे स्कंद में देखते हैं कि ब्रह्मा जी को भी किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है किसी को जन्म देने के लिए. तो उस ब्रह्मा जी को तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म दिया है, तो उनको किसी स्त्री की क्या आवश्यकता होगी? Lord Indra wanted to punish the inhabitants of Vrindavan because Krishna dissuaded them from worshipping Indra, and instead he channeled their worship towards to Govardhan. Indra was angry. He came with the after effects of heavy
Just carry one of these big mangoes and pin this here, boil a hole and put your finger, left finger inside it and just raise it up like this for 7 days. Let's see. महाराज बोल रहे हैं कि अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूँ तो हमको उसे यही बोलना चाहिए कि ठीक है, हम आपको कोई गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप बड़ा सा एक आम लेके अपने कानी उंगली पे 7 दिनों तक धारण करके रखिए और देखिए कि वो आदमी व्यक्ति कर पाता है या नहीं। So the tendency is someone who is not a devotee reads this text where the Bhagwatam are saying, "Oh Lord, you are worshipped by all the demigods like Brahma, the four Sanas, the four Kumara, and even the King of Heaven. You are the ultimate." There's someone who is a disbeliever will say, "Well, that is because Krishna is their man. And so because Krishna is their king, their citizens, and so they will say anything about Krishna." कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे भागवतम में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान द्वारकावासी जैसा बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान की पूजा ब्रह्मा शिव जी भी करते हैं, उनको वो कभी कभी बोलते हैं कि ये तो ऐसा इसलिए है क्योंकि द्वारकावासी के राजा कृष्ण थे, इसीलिए वो अपने कृष्ण भगवान की स्तुति ऐसे शब्दों में कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली में वास्तव में ऐसा है नहीं कि कृष्ण एक भगवान है। If we don't want to recognize Krishna, we don't want to worship Krishna, we can have so many reasons not to do so. अगर हम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग बहुत अलग प्रकार के कारण निकाल सकते हैं कि क्यों कृष्ण भगवान को भगवान नहीं माना जाए। Krishna designed it in that way to deceive people. Even when he was to live, he deceived the people. ये कृष्ण भगवान का एक गुण है कि वो किसी भी व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं। अगर वो कृष्ण भगवान को मतलब मानना नहीं चाहता या फिर उनको भगवान नहीं मानना चाहता तो वो कृष्ण भगवान उसको डिसीव कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। So the worship of Krishna is meant for the people. तो कृष्ण भगवान की पूजा जो सिर्फ श्रद्धावान लोग हैं सिर्फ वही करते हैं। Before this, Bhagavatas came to this platform of having to live with Krishna in the same city, having to serve him, having to come to meet him face to face. They have performed so many lifetimes of devotional service. जो ये द्वारकावासी हैं जो अभी कृष्ण भगवान के सामने उनके सामने सारे कार्य कर रहे हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कई जन्मों तक बहुत सारी तपस्याएं की हैं, तब जाके आज उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। Again in the Bhagwatam, in the 3rd canto, we find how Lokapila appeared, and at some point in time, his father had left home to take to Vanaprastha, to take the science of life, and he was there just attending to his mother's needs. But at some point in time, after instructing his mother, Devabhuti, after fully giving her all of the devotional values, he also left and left his mother behind. हम देखते हैं तीसरे स्कंद में कि जो कपिल देव हैं जब उनका जन्म हुआ तो कर्दम मुनि फिर बाद में संन्यास लेके वन को चले जाते हैं, तो उनकी माता जो देवहूति थी उनका ध्यान भगवान ने रखा और उनको बहुत सारे उपदेश भी दिए, लेकिन सारे उपदेश को देने के बाद फिर वो चले गए माँ को छोड़कर चले गए। Before Kapila left, Devabhuti was fully self-realized. A woman, fully self-realized. तो जब कपिल देव उनको अपनी माँ को छोड़ के जा रहे थे उससे पहले ही
देवती माता को पूरा तत्व ज्ञान हो गया था, उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था। So all of these leaders are meant to increase our faith and then to make people understand that Krishna is available for anybody, whether you're a woman or a man, old, young, whatever. Krishna is the God for everyone. तो ये सारा विवरण भागवतम इसलिए आता है ताकि इस बात को हम समझ सकें कि चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सब कोई के लिए भगवान श्री कृष्ण है और सब कोई भगवान श्री कृष्ण को पा सकता है। And so if we are aspiring to achieve the highest perfection of life, we should worship Lord Krishna. तो अगर हमको अपने जीवन में श्रेष्ठ गति प्राप्त करना है तो हमें श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। If even we have different type of desires, we should worship Lord Krishna. अगर हमारे मन के अंदर कुछ भौतिक इच्छाएं भी हैं, फिर भी हमको श्री कृष्ण भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। And the good thing is that devotional life, devotional culture, devotional service is very simple. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भक्ति है वो बहुत ही सरल है। Now in India, it could be very challenging, it could be very difficult, because in India we are groomed in different type of worship from childhood. लेकिन भारत में दिक्कत है कि हम लोग बचपन से ही हम लोग को अलग-अलग तरीके के देवी देवताओं की पूजाओं के बारे में बताया गया है। And so when you encounter someone, or you are fortunate enough to even encounter devotional life, service to Lord Krishna, and all of these different cultural values are there, it's so difficult to keep up the petty worship that we have been engaging in, to jump onto the supreme transcendence. It's so difficult. I've seen it, and people, they've come fast. And there is nothing, you don't just neglect the fact that is a type of condition. तो क्योंकि बचपन से ही वो लोग अलग-अलग देवी देवताओं भारत में पैदा होने के कारण अलग-अलग देवी देवताओं की बचपन से पूजा करते आ रहे हैं, इसलिए जब हम लोग भक्ति में भी आते हैं तो कृष्ण को सर्वोपरि भगवान मानना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी-कभी लोगों के लिए। लोग हमेशा आके मेरे सामने कबूल करते हैं कि ये मेरे लिए कंडीशन ही मतलब एक बंधन के समान हो गया है कि बाकी देवी देवताओं को हम भूल के कृष्ण भगवान को सर्वोपरि भगवान मान लें। Time impacts on our existence, and so we change bodies from boyhood, from childhood to boyhood to old age, and then death comes. Krishna's body never changes, is never yoga. तो हमारे और कृष्ण भगवान के बीच में अंतर क्या है कि हमारे ऊपर काल का असर होता है। हम लोग पैदा होते हैं, बचपन होता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मर जाते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान कृष्ण जी का जो शरीर है वो आध्यात्मिक है, वो हमेशा नव यौवन रहते हैं, हमेशा यौवन अवस्था में ही रहते हैं। So in this text, also it is mentioned here, you are the supreme transcendental Lord, and inevitable time cannot exert its influence upon you. तो आज के श्लोक में भी हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर काल का कोई भी असर नहीं होता। So the Bhagavatas, they are not just exaggerating. The statement is also there in other scriptures, other people, other highly elevated souls, demigods, sages. They have also made similar statements. How Krishna's body is not influenced by time. तो द्वारकावासी जो यहाँ पे श्लोक में बोल रहे हैं कृष्ण भगवान के बारे में विवरण दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। बाकी सारे अन्य ग्रंथों में भी साधुओं द्वारा ये बात की पुष्टि सेम बात की पुष्टि की गई है कि कृष्ण भगवान का शरीर जो है वो आध्यात्मिक है और उसके ऊपर काल का कोई भी असर नहीं होता। Krishna lived on this planet for how many years? कृष्ण भगवान इस भौतिक जगत में कितने वर्षों तक रहे थे? 125. 125. 125 years. Now, someone lives on this planet for 100 and let's say not 125 years. Say he lives for 100 years. Will he need a walking stick? Yes. Most cases, yes. Will this body be old? Yes. Most cases, he will get gray hair. Yes. Did Krishna have any of these? No.
तो महाराज बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान इस भौतिक जगत में 125 वर्षों तक रहे थे। तो मान लीजिए अगर कोई इस भौतिक जगत का कोई भी व्यक्ति 125 छोड़िए अगर 100 वर्ष की आयु तक भी जीता है तो क्या वो कभी बूढ़ा होगा? उसके बाल सफेद होंगे, उसके हाथों में मोस्टली लाठियां आ जाएंगी। लेकिन कृष्ण भगवान की इन सभी चीजों, ना ही उनके सफेद बाल हैं, ना ही उनके हाथ में लाठी है। That is the meaning of Krishna not being, time not having influence on Krishna. तो इससे इसी बात की पुष्टि होती है कि कृष्ण भगवान के ऊपर समय का कोई भी असर नहीं होता। See, all of these details are there just to convince us that, hey, that young boy, Lord Brahma, see, it's not that people, in which you chastise people, why is so much confused? Krishna is too Bhagavan for him. Why don't you just worship him? Even Lord Brahma got confused at one time. तो इवन ब्रह्मा जी को भी कभी-कभी भ्रम में हो जाते हैं। कृष्ण भगवान तो भगवान की गुणों के बारे में जानकर उनको देख के कभी-कभी ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं। Esau was watching from Brahma Loka, seeing Krishna frolicking around in Braj with all of these cowherd boys. And so he had some doubt whether this is my Govinda. Is it my Govinda? He wanted to perform an experiment. Scientists, they like to perform experiments before they believe in something. So Lord Brahma is the supreme scientist. He wanted to perform an experiment. He wanted to steal the cows and the cowherd boys. And Lord Krishna replaced them by expanding himself. तो एक बार ब्रह्मा जी भी कैसे भ्रमित हुए ब्रह्म लोक से उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ खेल रहे हैं। तो उनको भी संदेह हो गया कि मेरे परम परमेश्वर गोविंद भगवान ही है क्या? तो उन्होंने इस बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। और वो आके जो ब्रह्म मोहन लीला के बारे में लोग जानते हैं, उन्होंने सारे गौओं और गोपाल बालों को छुपा लिया। और कृष्ण भगवान ने अपने आप को विस्तृत करके उन गायों और ग्वाल बालों के रूप में अपने आप को विस्तृत कर लिया। If someone comes to steal something from our house, we will call the police. अगर हमारे घर में कोई चोर अगर आ जाता है चोरी करने के लिए तो हम लोग तुरंत पुलिस को बुलाएंगे। If someone comes to kidnap any of our relatives or our friends or anyone from our community, we will call the police. अगर कोई हमारे सगे संबंधियों का अपहरण करने के लिए आता है तो हम तभी हम लोग क्या करेंगे? तुरंत पुलिस को बुलाएंगे। Krishna did not call the police. कृष्ण भगवान ने किसी पुलिस को नहीं बुलाया। He behaved as if nothing has happened. उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। He just expanded himself. उन्होंने सिर्फ अपने आप को विस्तृत कर लिया सभी ग्वालों और ग्वाल बालों के रूप में। And when Lord Brahma came back to check the effect of his action, he blamed himself. Oh my gosh. He is my Govinda. और ब्रह्मा जी ने जब दोबारा टेस्ट करने के लिए आया कि देखे चल के क्या हुआ, तो उन्होंने जब देखा सभी ग्वाल बालों को और गायों को वैसे की वैसे ही हैं, तो उनको समझ में आ गया कि अरे ये तो हमारे परम परमेश्वर भगवान ही है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। So he came to beg Lord Krishna for forgiveness. तो उन्होंने भगवान के सामने आके क्षमा याचना मांगी। And Lord Krishna also taught him a lesson. और कृष्ण भगवान ने भी उनको एक लेसन सिखाया। He let Brahma realize that he's just a small Brahma with 4 heads. There are other Brahmas with thousands and millions of heads. So he invoked some of these Brahmas to come. और कृष्ण भगवान ने उनको ब्रह्मा जी को इस बात का अनुभूति करा दी कि वो बहुत एक छोटे से ब्रह्मा हैं, क्योंकि उनका सिर्फ 4 सिर है। ऐसे अनेकों ब्रह्मांड में अनेक सिरों के साथ अनेक ब्रह्मा जी और भी हैं। Then Brahma really realized how minuscule, how insignificant he was in Krishna's creation. तब फिर ब्रह्मा जी को इस बात की अनुभूति हुई कि वो कितने से छोटे से तुच्छ प्राणी हैं। भगवान के पूरे क्रिएशन में बहुत ही तुच्छ प्राणी के समान हैं। But all of these leelas are to help us increase the quality of our faith in Krishna. तो ये सारी लीलाओं का विवरण इसलिए है ताकि हमारा श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा जो है वो बढ़े। Because if we know someone deeply, that will motivate us to be able to deepen our relationship with that person.
क्योंकि क्या होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो हम उस संबंध में और गहराई में जाना चाहते हैं, और उनके बारे में हम जब जानते हैं तो और गहराई में हम उनके संबंध में जाते हैं। So Krishna's different leelas is just to be able to let us have a deeper faith and surrender unto Him. तो भगवान ये सब सारी लीलाएं इसलिए करते हैं ताकि हमारा भगवान के प्रति संबंध और भी गहरा और गहरा होता जाए। The Bhagavatas, they've already attained that level, so they are expressing their experience and wanting us to understand that their lived experience with Lord Krishna is what emulating in cultivating devotion to Krishna. तो ये जो द्वारकावासी हैं बहुत ही सरल भक्त हैं और वो अपना सरल हृदय भगवान की इस प्रकार से स्तुति करके प्रकट कर रहे हैं। There are many demigods, millions of demigods who are overseeing different affairs in the material world. But Krishna is the supreme personality of God. लाखों देवी देवता हैं इस पूरे ब्रह्मांड में जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट का निरीक्षण कर रहे हैं या फिर उनका देखभाल कर रहे हैं, लेकिन सभी देवी देवताओं से ऊपर श्री कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है। I remember one occasion, people like that, one of Lord Brahma's sons, he had gone to see his father, Lord Brahma, and when he went into television to Lord Brahma, he saw Lord Brahma was chanting Mala. तो एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा के पुत्र उनसे मिलने के लिए वहां आए और उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी एक जपमाला पर कुछ जप कर रहे हैं। So people like that, he asked his father, Lord Brahma, "Hey, Papa, we thought you are the Supreme Lord. Who is the object of worship? We see, I'm seeing you chanting Mala. Whose names are you chanting?" ब्रह्मा जी के पुत्र ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पापा आप किसका नाम का जप कर रहे हैं? मुझे तो ज्ञात था कि आप ही सबसे परम पुरुषोत्तम हैं, लेकिन आप ही, मैं देख रहा हूँ कि आप ही किसी के नाम का जप कर रहे हैं। वो व्यक्ति कौन है? Lord Brahma kindly explained to him that, yeah, a lot of people get confused that they think that he is the Supreme Lord. Yes, he is the Supreme Lord of this universe, but this universe is just a small fragment of creation. He is just this engineer of the universe. He brought the different bodies, different elements that were originally raw materials from Lord Krishna into focus and then assemble different bodies. And he is not the Supreme Lord, he is just an engineer. तो ब्रह्मा जी ने बोला हाँ, इस तरह का संदेह बहुत सारे लोगों को हो जाता है कि मैं ही परम पुरुषोत्तम हूँ, लेकिन इस पूरे सृष्टि में ये ब्रह्मांड का मैं एक छोटा सा अंश हूँ। मैं बस एक इंजीनियर के समान हूँ जो कि चीजों को लाके एकत्रित करके सृष्टि कर देता है, लेकिन एक्चुअल में परम पुरुषोत्तम भगवान ही है। And even himself, he worships that supreme personality of God, the Lord Krishna, Govinda. और इसीलिए ब्रह्मा जी भी इसी परम पुरुषोत्तम गोविंद भगवान की पूजा करते हैं। So if Lord Brahma, the supreme Lord of this universe, is worshipping Lord Krishna, who are we? अगर ब्रह्मा जी जो कि ब्रह्मा जी जो कि एक्चुअली सृष्टि के सबसे परम श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, अगर वो श्री कृष्ण भगवान गोविंद की पूजा कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं ब्रह्मा जी के सामने? तो हमें भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। So we shouldn't have any difficulty. There's nothing else to do with our lives than to strive to attain perfection in this very one lifetime. इसीलिए हमको इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं चाहिए कि हम लोग सिद्धि जो परम सिद्धि वो इसी जीवन में इसी पर्टिकुलर जीवन में प्राप्त करें। And so we should follow the example of the Dwarkavasis and understand that Lord Krishna is the ultimate resting place of all living entities and engage in his transcendental law themselves. तो हमको द्वारकावासियों का उदाहरण अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए कि जिस प्रकार द्वारकावासी बोल रहे हैं कि सबसे पूजनीय व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान ही है और हमको उनकी शरण लेनी चाहिए, उसी प्रकार हमको भी उनका अनुसरण करते हुए सेम काम करना चाहिए। And try to understand, you are very fortunate, we are very fortunate. Not everyone on this planet is going to worship Krishna in this lifetime. और हमको ये समझना चाहिए कि हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस सृष्टि में बहुत ही कम लोग हैं जो कि श्री कृष्ण भगवान की पूजा एक्चुअली कर रहे हैं।
it needs so many lifetimes of involvement in spirituality before one evolves to the platform where they dedicate their lives to the service of Krishna. अनेकों अनेकों जीवन तक भक्ति करने के बाद कोई इस स्थिति में पहुंचता है कि वो भगवान की डायरेक्ट सेवा में लग सके. So some people may even read this book and hear these expressions of the associates of Lord Krishna. They do not make any meaning to them. क्योंकि बहुत आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सेम भगवद गीता भागवतम पढ़ेंगे लेकिन उनके ऊपर इस चीज का असर नहीं और वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है. Because they don't have sufficient sukriti. क्यों? क्योंकि उनके पास अभी सुकृति उतनी अर्जित नहीं हुई. So if you consider that, we should understand how fortunate we are. तो हमको समझना चाहिए कि हम लोग फिर कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डायरेक्ट लगे हुए हैं. हरि बोल हरि बोल. So, if Lord Krishna has been worshipped by highly elevated demigods, like Brahma, Lord Shiva, Lord Indra, we are so insignificant. तो अगर श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य कई बड़े बड़े देवी देवता कर रहे हैं तो हम लोग तो उनके सामने बहुत ही तुच्छ प्राणी के समान है. तो हमारे लिए क्या कठिनाई है? We should not waste any time. हमको अपना कोई भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए. We should not procrastinate. हमको कोई सी प्रोक्रास्टिनेट मतलब सोचना ज़्यादा सोचना नहीं. Anything worth doing is worth doing right now. Yes. जो अभी करना है वो अभी करना चाहिए. ज़्यादा सोचना जो नहीं भी करना है हमें वो अभी तुरंत करना चाहिए. ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. So, any comments or questions? आप लोगों का कोई प्रश्न है या फिर कोई कमेंट है? Maharaj, in Bhagwatam, it is described that Golok Vrindavan is over our head. So, उनका earth is round and everywhere there are people. So how you know where it is? How to describe it? Position of Golok Vrindavan. Very nice question. The creation of Lord Krishna, material creation, is just like a small pigment of the whole of Krishna's environmental situation. So there is the Vaikuntha planets, innumerable spiritual planets, where if one is able to attain perfection, people go there. That is far beyond Lord Brahma's planet. Lord Brahma lives on Brahma Loka, higher heaven. So Goloka Vrindavan is higher. And if you read the Brahma Samhita, it is described there, the different lokas. So Goloka Vrindavan is the highest of all the planets and is there in the spiritual sky. So प्रश्न ये है कि कैसे कभी लोगों को हम लोग स्पष्ट करें कि गोलोक वृंदावन, जैसे हम लोग कहीं पढ़ते हैं कि गोलोक वृंदावन हमारे ऊपर है और तो ये जो पृथ्वी है गोल है, तो ये हम कैसे लोगों को समझाएं कि गोलोक वृंदावन हमसे ऊपर है? महाराज जवाब में दे रहे हैं कि कोई भी जो ये हमारी ये ब्रह्मांड जो है, हमारा ये मटेरियल और भौतिक जगत जो है, ये पूरी सृष्टि का बहुत ही छोटा सा अंश है पूरे, और उसमें भी एक ब्रह्मांड के भीतर भी बहुत सारे अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम है और उसमें सबसे ऊंचा लोक है ब्रह्मा जी का सत्यलोक, और सत्यलोक से भी काफी ऊपर है गोलोक वृंदावन।
So, and when you go to Vrindavan, you never come again to take that in this material world. और अगर आप कभी भी गोलोक वृंदावन जाएंगे तो कभी वहां से वापस कोई लौट कर नहीं आता. So here in the material world, people are struggling. There's so much of fighting. You are sitting down in your country, sitting down in your home. Some robbers are, broken in. They're sitting down in their city. Your neighbor country has invaded the whole country and seized power and killing people. And people think sometimes that tomorrow, in the material world, tomorrow will be better. हम देखते हैं कि भौतिक जगत में कितने सारे संघर्ष हैं. जैसे सब लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं. हम लोग अपने किसी भी देश में किसी घर में अपने कोने बैठे हैं और देखा जाता है कि कोई दूसरा देश या कोई अन्य व्यक्ति हमारे घर में घुस के हमको प्रताड़ित कर देता है या फिर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है और हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है. फिर भी हमको ऐसा प्रतीत लगता है कि शायद कल ये जो भौतिक जगत है वो अच्छा हो जाएगा. Tomorrow is not going to be better. कभी भी भौतिक जगत में कल कभी भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला है. That's not what the Shastra says. The Shastra says things will go on deteriorating in Kali Yuga. शास्त्र बताते हैं कि कलयुग में समय के साथ साथ और भी चीजें और भी ज्यादा पतित होंगी, और भी ज्यादा कठिनाइयां और ज्यादा बढ़ेंगी. So that information is not a fantasy because we are seeing already. Look, Russia invaded Ukraine. Now they are threatening to invade Poland. They're threatening to invade other European countries. So it is getting better. तो शास्त्रों में जो ये सब बातें दी गई हैं ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है. ये तो हम लोग भी साक्षात रूप से देख भी रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया. तो चीजें दिन पर दिन और भी ज्यादा गिरती चली जा रही हैं. So if you want to live a perfect, peaceful, happy life without any interruption, we should engage in devotional service, be purified, to be eligible to go back, to walk back to God, back to Goloka. तो अगर हम लोग सदैव हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमको भक्ति करते हुए गोलोक वृंदावन के लिए जाना चाहिए. अगर वहां गए तो फिर हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं रहेगी. I have a friend, and sometimes some people, they don't know about this, and so when they get into devotional service, they think, why are you wasting your time? Why don't you enjoy your life? So I have a friend from Assam, young boy. He just finished his first degree, so he got admission to do a master's program in Bangalore. So he came to Mayabo, and then he was telling me a story how one of his professors, he told one of his professors that, in our movement, in this country, one of our gurus, one of science, he has a PhD in management science. And so what did the professor say? He said, so, why is he destroying his career? By being a Swami, by being a devotee of Lord Krishna, he destroyed his career. So महाराज बता रहे हैं कि एक बार एक महाराज के एक फ्रेंड है आसाम के. तो वो आसाम से पीएचडी कर रहे हैं. तो उनके प्रोफेसर ने एक बार प्रोफेसर से डिस्कशन के समय महाराज के जो मित्र हैं उन्होंने बताया प्रोफेसर को कि इस्कॉन में एक स्वामी है जिन्होंने पीएचडी किया है मैनेजमेंट साइंसेस में. तो प्रोफेसर का रिएक्शन क्या था? वो बोल रहे थे, अरे उन्होंने पीएचडी किया है तो फिर वो अपना सन्यासी बनकर अपना करियर क्यों खराब कर रहे हैं? So you may be engaged in devotional service, but some people out there, they may not know the value, the importance of devotional service. That devotional service is the highest duty of human civilization. ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को भक्ति के गुण के बारे में, क्यों भक्ति करनी चाहिए और भक्ति का लाभ क्या है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है. कि ये भक्ति जो है सबसे सर्वोपरि चीज है, इसका ज्ञान नहीं है लोगों को. So people who don't understand, you may be busy and engaging devotional, even just by going on vegan. People make a joke of you that, oh come on, why are you suffering yourself? तो जिन लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं होता तो
उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई वेजिटेरियन भी बन जाता है तो उनको लगता है अरे तुम ये सब इतना ज्यादा संघर्ष क्यों कर रहे हो, मतलब अपने आप को इतने सारे भोग से अलग क्यों कर रहे हो, वंचित क्यों कर रहे हो? So people can't control their mind, they can't control their senses, so they rationalize their deviations. क्योंकि लोगों का अपने इंद्रियों के प्रति कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए वो ऐसे बात बोलते हैं ताकि अपने भोग की इन चीजों को उसकी पुष्टि कर सके. So they blame you, who is doing the appropriate thing, who is doing the proper service, who is helping to revamp human society. They blame you for worshiping Lord Krishna because you are trying to help in positively changing human society and the consciousness of people. तो हम लोग वो कभी-कभी भक्तों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप लोग सभी लोगों को इंद्रिय भोग से अलग कर रहे हैं, इसलिए इस चीज का आरोप वो भक्तों के ऊपर लगाते हैं कि आप लोग मानो सभी समाज के लोगों को इन सब चीजों से दूर कर रहे हैं. So Krishna advised us in this same very chapter that we should not hesitate. He told we should not hesitate. We should go on in our devotional service without any delay. भगवान बताते हैं कि हमको कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए भक्ति करने के लिए, बिना किसी समय का व्यर्थ किए हुए हमें तुरंत भक्ति चालू करनी चाहिए. So Krishna Loka is real, is there, but it's far, far beyond Brahma Loka. Far, far is the highest planet in the spiritual. तो जो कृष्ण गोलोक वृंदावन है, ये ब्रह्मलोक से भी बहुत ज्यादा ऊपर है. Any other comments? It's already past 10, so we need to Yes. एक तो क्वेश्चन होगा रहे. Swami, I have a question that it's true. प्रणाम गुरु जी. हम बोल रहे हैं जिससे शंकर जी के साथ पार्वती जी रहती है, सीता जी के साथ राम है, हाँ कृष्ण के साथ राधा है. मेरे को ये नहीं पता ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी है तो ब्रह्माणी जी नहीं है, तो वो कौन? यही बता दीजिए, मुझे बहुत कंफ्यूजन करता है. Just like Krishna, Radha Rani is there, Lord Shiva Parvati is there, with Brahma who is there? Saraswati. Lord Brahma also has a concept. You want to know his concept? Yes. आप ट्रांसलेट कर दीजिए. तो Saraswati. महाराज बता रहे हैं ब्रह्मा जी के साथ उनकी भार्या जो है वो सरस्वती है. भाग्य? हाँ. लेकिन हम तो सुने सरस्वती जी तो वो ना उनकी वाइफ नहीं है, बेटी है. सभी ब्रह्मा जी का सभी बेटा बेटी है. She is telling that she has heard that Saraswati is not her wife. She is I'm sorry. No. Who is Brahma? Saraswati only. Saraswati. Because every living entity is the daughter or son of Brahma. So No, but what is she asking? she is asking that who is the consort of Brahma. Oh, who is the concept of Brahma? Yes. Because Brahma produced so many Yes. entities. If you read Bhagwatam, the third canto is mentioned how the different entities came out from his different parts of his body. Some from his forehead, Vasu came from his forehead, some from his back, some from his buttocks, anus, so many ways. He is the mother of the universe, the mother of the living entities in this universe. At the same time, he is the father. कि पूरे सृष्टि में एक्चुअली ब्रह्मा जी के अलग-अलग अंशों से अलग-अलग जीव निकले हुए हैं. तो एक्चुअली इस रूप से ब्रह्मा जी माता पिता दोनों हैं सभी जीवों के. He didn't need a woman to procreate because he was empowered by Lord Krishna. उनको किसी स्त्री की जरूरत नहीं है किसी को जन्म देने के लिए, क्योंकि उन्हें भगवान का स्पेशल वरदान मिला. And I gave the example of Lord Brahma, how he could procreate without sex. And I relate that to Krishna. If Lord Brahma, who is a jiva, can produce entities without needing a woman, what about Lord Krishna? मैंने ऑलरेडी बताया कि इवन ब्रह्मा जी को भी किसी संभोग की जरूरत नहीं किसी को उत्पन्न करने के लिए, तो कृष्ण भगवान को तो बिल्कुल नहीं. तो उनके साथ ब्रह्माणी जी क्यों नहीं बैठती? उनके साथ ब्रह्माणी क्यों नहीं बैठती है? ब्रह्माणी सरस्वती ऑल द सेम. Then why any concert is not sitting with Brahma ji, just like Krishna Radha Rani is there. Where Brahma has a different duty to perform. Brahma
ब्रह्मा जी का अलग ड्यूटी है, मतलब उनको कुछ और भी बहुत सारे अन्य कार्य भी करने हैं। He's very austere, he doesn't want to enjoy. ब्रह्मा जी बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनको ब्रह्मचारी। किसी प्रकार का भोग की इच्छा नहीं है। No, we're gonna say he's a brahmachari, but he's also a brahmachari, but the point is that he didn't need a female partner for enjoyment. ब्रह्मा जी ब्रह्मचारी नहीं है, फिर भी लेकिन उनको किसी स्त्री की जरूरत नहीं है, किसी को उत्पन्न करने की। It's a mystic that produces entities. But see, the funny thing is that even Lord Brahma, he got attracted by one of his daughters. तो ब्रह्मा जी बहुत बड़े योगी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इवन वो ब्रह्मा जी भी अपने एक पुत्री के द्वारा आकर्षित हो गए थे। But then he quickly rectified himself. This is called self-rectification. He rectified himself. He realized that this was bad. He was also admonished by sages that this is not good. You are Lord Brahma of this universe. How could you ever think of it? And to rectify himself, he changed his body. He gave up that body. हम लेकिन देखते हैं कि यही अंतर है हमारे और ब्रह्मा जी के बीच में। ब्रह्मा जी जैसे ही अपने पुत्री के प्रति आकर्षित हुए तो उन्होंने तुरंत अपने आप को सुधार लिया, क्योंकि बाकी बहुत सारे ऋषि मुनि ने भी उनको बोला कि ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उन्होंने अपने उस शरीर का तुरंत त्याग कर दिया। He didn't say, like modern politicians, and I know in the case of the US, the ex-president, they have brought like 50 charges of felony and, high crimes against the state on him, but then he still goes ahead, making some campaign. I'm legitimate, I didn't see anything wrong. No accountability. Brahma showed a sense of accountability. महाराज बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी आज के नेताओं की तरह नहीं है, जिनके ऊपर सैकड़ों आरोप लगे रहते हैं, फिर भी वो जब लोगों के सामने जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं एकदम सही व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर कोई भी दोष नहीं है। जैसे ही ब्रह्मा जी के ऊपर ऋषि मुनियों ने इस चीज का आरोप लगाया, उन्होंने तुरंत अपना शरीर का त्याग कर दिया। Why? Because Lord Brahma is the devotee of Lord Krishna. क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए। A devotee is accountable. He does something wrong, he accepts his wrong and rectifies himself. क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है, अगर उसके अंदर कोई भी त्रुटि या कमी होती है, वो तुरंत उसको कबूल करके उसको सुधार लाता है। Now we can relate that to our family setting. Someone does something wrong, whether you are the husband, whether you are the wife, whether you are the child. If someone does something wrong and they are told, your child can even tell you, Baba, what you did is wrong. Do you get angry or you rectify yourself? If you get angry, you are not being accountable. तो ये चीज हम लोग अपने परिवार में भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग अपने पारिवारिक संबंध में भी अगर कोई गलती करते हैं तो आपका पुत्र या पुत्री भी आपको आके आपको सुझाव दे सकता है कि पापा आपने ये गलती की। तो अगर आप सुधार नहीं लाते, इसका मतलब कि आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। And it is such a difficult thing because we the men, we think that by dint of the influence of we have this issue above that is so difficult to deal with. And so, if a man will do something wrong in the family, instead of accepting like Lord Brahma and rectifying ourselves, no, we claim that we are right. लेकिन ये चीज करना बहुत ही कठिन है। हमें बता रहे हैं कि क्योंकि हमारा अहंकार इतना, अगर हमारे अंदर कोई त्रुटि होती है फिर भी हम उसको कबूल नहीं करते, क्योंकि हमारा अहंकार बहुत ज्यादा है। लेकिन हमको ब्रह्मा जी से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने अपनी गलती को तुरंत कबूल किया और उसका सुधार लाया। So each of these pastimes you will find in our very literature, we can relate the essence to our everyday reality and we'll learn something from it. तो हमको शास्त्रों में लीलाओं को पढ़कर यही समझना चाहिए कि हमको ये जो सीख हमको मिल रही है उसको अपने जीवन में कैसे उतारें। So Lord Brahma is an epitome of accountability. तो ब्रह्मा जी हमको दिखा रहे हैं कि कैसे हमको अकाउंटेबल रहना चाहिए, जैसे अपने गलतियों को कबूल करके अपने अंदर सुधार कैसे लाना चाहिए तुरंत। He did something wrong, he offended Krishna, he was accountable. He pursued his daughter, he was attracted to his daughter, he was accountable.
तो देखते हैं कि जैसे जब ब्रह्म विमोहन लीला में उन्होंने तुरंत अपनी गलती को स्वीकार करके कृष्ण भगवान से माफी मांगी, सिमिलरली जो अपनी पुत्री के प्रति उन्होंने आकर्षित किया तो उसको भी तुरंत कबूल किया। If you do something wrong to your child, it behooves you to beg that child for forgiveness. अगर आप अपने पुत्र पुत्री के साथ भी अगर कोई गलत व्यवहार करते हैं तो ये जरूरी है कि आप उनसे क्षमा मांगे अपनी गलती के लिए। I remember some years ago, I was in Delhi and we had a program. One of my friends invited me for a program, Namahatma program. And so after the program, one lady, elderly lady came to me and was complaining about her 35 years old child. 35 years old son who was living with her in the home. तो महाराज बता रहे कि एक बार महाराज दिल्ली में गए थे प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पे एक स्त्री थी, वो अपने 35 वर्ष के पुत्र के कुछ गलतियों के बारे में वो बता रही थी। And I knew what happens traditionally with the parents. That's what Bhagwatam I studied in my master's program. I know what happens with parents. So immediately I told this Mataji that she said her 35 years old son doesn't talk to her. They live in the same house. Doesn't talk to her for a long time. And then I knew what would be wrong. I said, Mataji, you are the cause of all the problems. You have crossed your boundary. You are seeing him like a 5 years old boy, and so you want to control him all the time. And so you got too much on his nerves. And that is the reaction. When you get back home, call your son and beg him for forgiveness. You will reconcile. So after a year, I went back to that same place, and an elderly lady came to me, thanking me. I couldn't remember. So I said, Mataji, what happened? I don't know you. महाराज बता रहे हैं कि वो स्त्री बता रही थी कि उनके पुत्र बहुत दिनों से उनसे कोई बात नहीं कर रहे थे। तो महाराज ने बताया कि एक्चुअली उसमें से आपकी भी गलती है, क्योंकि आप अपने 35 वर्ष के पुत्र को 5 वर्ष के पुत्र की तरह कंट्रोल करना चाहती हैं, इसी कारण वो आपका पुत्र आपसे बात नहीं कर रहा है। तो महाराज ने जब ये बात बताई तो उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र से जाके माफी मांगी, और जब महाराज दोबारा वहाँ गए तो महाराज को आके उन्होंने धन्यवाद दिया कि महाराज आपके कारण हमारे रिश्ते भी बहुत अच्छे हो गए, सुधर गए। So she told me that last year when you came here, this was my complaint. You advised me, I followed your advice, and now I have reconciled with my son. We are happily living together. उन्होंने महाराज से धन्यवाद दिया कि महाराज पिछले वर्ष आए थे, आपने मुझे सलाह दी थी, मैंने अपने बच्चे से जाके माफी मांगी, और आज हमारे माँ और बेटे का दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, और हम बहुत ही खुशी के साथ रह रहे हैं। In most cases, we the parents will not be accountable. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत बार हम लोग अपने पेरेंट्स का जो रोल अदा करना है वो नहीं करते। And what happens with that is that if your child grows up, finishes university degree, gets a job, by the time they're looking for a job, they're looking for a job in a very, maybe this is east of India, right? So they're looking for a job in the north, so that they don't have anything to do with you. इसीलिए आजकल हम लोग देखते हैं कि आजकल जब बच्चे डिग्री अपना अर्जित कर लेते हैं तो फिर वो भारत में नौकरी नहीं करना चाहते, बाहर चले जाना चाहते हैं, दूर। So we should be accountable. If we say we are not this body, if we tell somebody we're wrong, whether it's our child, we tell them, I'm sorry. It do not remove one follicle of air from our bodies. It will not remove one follicle of air from our body, but it will save the whole culture of love in the family. कभी कभी क्या होता है, हम लोग का बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारे पुत्र मतलब जो बोलते हैं ना, बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा पुत्र या पुत्री हमारा इतना अच्छा देखभाल करें कि हमारा कोई छोटा भी बाल बांका नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत एक्सपेक्टेशन है। Okay, any other comments? Yes. Maharaj, it's quite true that in India they have different demigods. So we, being in Krishna consciousness, should we try to change them or leave them as they are? That's a nice question. प्रश्न ये है कि भारत में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे
देवी देवताओं के लोग पूजा करते हैं, तो क्या हमको उनको बदलना चाहिए तुरंत कि आप सभी देवी देवताओं की पूजा छोड़कर कृष्ण भगवान की पूजा करिए? So we should not force them to follow our path. We should preach to them in loving relationship. महाराज बोल रहे हैं कि हम लोगों को किसी के ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप लोग भी कृष्ण की भक्ति भी तुरंत लीजिए, बल्कि हमको उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करना चाहिए. Because it's a type of conditioning and it's very, very difficult to overcome. क्योंकि देवी देवताओं की जो ये पूजा है ना, ये भी एक प्रकार का बंधन है और इससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल है. What we can do is to give them books to read. Papa books like Bhagwatam as it is, give it to them to read, encourage them to read. Or you should be giving them prasadam or both. हमको क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति लोगों को भगवान श्रील प्रभुपाद की किताब देना चाहिए और प्रसाद देना चाहिए. Prasadam works very nicely because sometimes you give them the books and they say, go with your book, I don't want to read. क्योंकि ये जो श्रील प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं, ये बहुत ही प्रभावशाली रूप से कार्य करते हैं. But in India, over 90% of people they like prasadam. लेकिन इंडिया में क्या है, हम लोग देखते हैं कि 90% से ज्यादा लोगों को प्रसाद बहुत ही ज्यादा प्रिय है. So instead of fighting with somebody who is in your family or a friend who is worshiping demigod, you can be giving them prasadam and be lovingly disposed to them, and they'll get purified. There are so many examples of how prasadam has changed so many people who are against devotional service, and they become high-profile devotees. तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे कोई भी सगी संबंधी अगर देवी देवता की पूजा में लगे हुए हैं, तो हमको उनको हमेशा प्रसाद देना चाहिए, क्योंकि ये प्रसाद खाते खाते फिर उनका हृदय जरूर परिवर्तित हो जाएगा. So no fighting. Don't tell people, oh, this is what Krishna said in the Bhagavad Gita. You have so many materials to say, that's why you want to be the demigod. That is not going to help matters. You're just creating more, friction. इसलिए हम लोगों को ऐसे लोगों के साथ मतलब लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये नहीं बोलना चाहिए तुम्हारे अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं इसलिए तुम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, बल्कि उनको सिर्फ प्रसाद और प्रभुपाद की किताब देनी चाहिए. You may say, well, I think that our process is that of repeating what Krishna says and what the acharyas have said. I just repeated what Krishna said in the Gita, that they are worshipping demigods, they are full of material desires, their consciousness is terrible and all this stuff. No, we don't make friends by being harsh to people. Krishna was harsh, but he is Supreme Lord. By his harshness, he purifies. Prabhupada was harsh, by his harshness, he purifies. We don't purify people by being harsh to people. महाराज बोल रहे हैं कि हमको कभी भी, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं तो भगवद गीता में बोला है कि जो देवी देवता की जो लोग देवी देवता की पूजा करते हैं उनके अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन ये सब डायरेक्ट चीजें हम लोग नहीं बोल सकते. हम लोग श्री कृष्ण भगवान की तरह हार्श या प्रभुपाद जैसे कभी कभी हार्श बोलते थे, लेकिन प्रभुपाद या कृष्ण जब किसी के प्रति हार्श रहते थे वो उनको शुद्ध करते थे. हम लोग ऐसा उनका इमिटेशन नहीं कर सकते. Thank you. That's a very pertinent question, very relevant question. It's a general problem, okay? Yeah, we should just be tactful how we deal with this problem. I remember sometimes the people are not even worshiping demigods. It's just that they're not interested in following Krishna consciousness. But we have to be tactful. We don't say, well, you're not following Krishna consciousness. Although you're my parents, therefore I abandon you. No. It's not a way to change people. We show them that we love them. If even they are not following our path, we should be lovingly disposed, and that will have an impact, positive impact on their lives. महाराज बोल रहे हैं कि आपके इस प्रश्न के लिए बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के बीच में आता है. और महाराज बोल रहे हैं कि जब भी हम लोग अपने सगे संबंधियों के साथ ऐसी स्थिति में रहते हैं तो हमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए. सिर्फ हार्श बोलने से, डायरेक्ट बोलने से उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि जब वो हमारे अंदर का प्रेम देखेंगे तो धीरे धीरे वो खुद भी परिवर्तित हो जाएंगे और इस भक्ति के मार्ग को ले लेंगे. Please try to understand
being a devotee, when you're chanting, you're following these principles. It didn't just come like an overnight thing. Try to understand, this is the postgraduate program in spirituality, and not everyone goes for postgraduate programs. तो महाराज बोल रहे हैं कि हम लोग को ये चीज का समझना चाहिए कि एक्चुअली जो भक्ति है ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की तरह है, ये सभी लोग नहीं कर सकते। हाँ, तो ये बहुत ही दुर्लभ चीज है। तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुरंत। We just have to be thankful and be friendly, so that people will gradually be elevated in their consciousness. हमको अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मैत्री रूप से लोगों को ऊपर लाना चाहिए। All right, thank you. One more question. He is asking. One is that sometimes somebody said that we should not give water to Tulsi Maharani, and at the same time, one more Madhavika said we should eat murgi, means chicken, and sur animals, and we should not eat cow because this is. What? Goat and hen. Chicken. Oh, really? Yes, mutton and chicken. They are demons. Because they are asuras. They are demons. माता जी का प्रश्न ये है कि बहुत सारे ऐसे They have लोग taken the responsibility. माता जी का प्रश्न ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमको एकादशी के दिन तुलसी के अंदर जल नहीं देना चाहिए, या फिर हम लोग मुर्गी या बकरे खा सकते हैं क्योंकि वो आसुरिक जीव हैं। हाँ, गाय नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो आसुरिक जीव नहीं है। So first of all, regarding the Tulsi, to worship Tulsi every day. I was Pujari when I was young, and would worship the deity services I've done every day, except for females, except they are on their menstrual plan. So I've not found that in any scripture, and the entire will say that. हमारे को जहाँ तक तुलसी महाराज जी की पूजा की बात है, तो हमको तुलसी महाराज की पूजा प्रत्येक दिन करनी चाहिए। फिर स्त्रियां जब उनका पीरियड का समय चल रहा है तो उस समय वो उसको छोड़ सकती हैं, और उनके परिवार के कोई दूसरे सदस्य तुलसी जी को जल दे सकते हैं या उनको पूजा कर सकते हैं। And for animals, we are Krishnatarians. Even the vegetables we offer to Krishnas. We cannot offer any animal to Krishna. और हम लोग क्या है, ना ही वेजिटेरियन, हम लोग कृष्णटेरियन हैं। तो इवन हम लोग जब वेज खाते हैं उसको भी जब तक भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो वो सही नहीं है, वो भी उसके अंदर भी पाप है। Not only that, even garlics and onions we don't take because they are in the mood of passion. They agitate the mind and the senses. तो हम लोग तो इवन लहसुन प्याज भी नहीं खाते क्योंकि वो तमुड़ में है, तो तमुड़ी चीज हम लोग नहीं लेते, रजोगुण सॉरी। So the point is, yes, whatever we do, we should do it as an offering. तो निष्कर्ष ये है कि हमको वही कार्य करना चाहिए जो कि कृष्ण भगवान ने बोला। And what Krishna does not require of us, he said, Patram Pushpam Phalam Tudam Yome Bhaktya. कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रेक्षते। So what Krishna does not require or request us to give to him, if your father tells you, if your husband tells you, or if your son tells you, Mama, give him milk. You don't go and give him honey. Give him milk. तो कृष्ण भगवान ने जो हमको अर्पित करने के लिए बोला है, हमें वही चीज अर्पित करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका पुत्र आपसे दूध मांग रहा है तो आप उसको जाकर शहद नहीं दे सकते, जो बच्चे ने मांगा है हमको वो देना चाहिए। इसी प्रकार कृष्ण भगवान ने जो अर्पित करने के लिए बोला है वही अर्पित करना चाहिए। Alright, with that better question. Alright, Srila Prabhupada ki Jai. Srila Bhagwatam ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare